Hello children, Assalamu alaikum. I am your grade 2 teacher. This is the book of novel The Happy Prince, student book level 1. Now start your chapter 3. Chapter 1 and chapter 2 प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेनेशन और रीडिंग हो चुकी थी, उनका क्लास वर्क एक्टिविटी वर्क भी जा चुका है. पेज नंबर 6 चैप्टर 3. द स्वैलो फ्लाइज ऑल डे. परिंदा पूरा दिन उड़ता रहा. ही इज टायर्ड, वो थक गया. एंड ही वॉन्ट्स टू स्लीप, अब वो सोना चाहता है. ही फ्लाइज ओवर द स्क्वायर, वो उस स्क्वायर के ऊपर उड़ता रहा. इन द बिग सिटी, उस बड़े शहर में. एंड ही लुक्स एट द ब्यूटीफुल स्टेचू, उसने वहाँ वो बहुत खूबसूरत सा मुजस्मा देखा. हाई अबव द सिटी, जो शहर के मिड में बहुत बुलंदी तक खड़ा हुआ है. ही रियली लाइक्स दैट प्लेस, उसे वो जगह बहुत पसंद आई. दिस इज अ गुड प्लेस, ये बहुत अच्छी जगह है. ही थिंक्स, उसने सोचा. आई कैन हेल्प हियर, आई कैन स्लीप हियर, मैं यहाँ सो सकता हूँ. द लिटिल बर्ड लैंड्स, वो परिंदा उतरा. एट द फीट द स्टेचू, उस मुजस्मे के पैरों के पास. यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम तो बहुत खूबसूरत हो. ही सेज टू द स्टेचू, उसने उस स्टेचू से, उस मुजस्मे से कहा. नाउ आई मस्ट स्लीप, अब मुझे यहाँ सो जाना चाहिए. आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज. ही पुट्स हिज हेड, उसने अपना सर जो है हिज विंग्स, अपने परों में छुपा लिया. एंड क्लोजेस हिज आइज, और अपनी आंखें भी बंद कर ली. ही इज अबाउट टू फॉल स्लीप, और फिर वो तकरीबन सो ही गया था कि व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स ऑन हिम, कि उसके ऊपर पानी का एक कतरा गिरा. व्हाट इज दैट, उसने सोचा. कि आज उसने अपने आप से पूछा कि ये क्या है. रेन, बारिश. देन ही लुक्स अप, उसने ऊपर देखा. द हैप्पी प्रिंस इज क्राइंग, उसने देखा कि वो प्रिंस, वो शहजादा जिसका स्टैचू खड़ा हुआ था, जिसके पैरों के पास वो सो रहा था, वो रो रहा था. वाई आर यू क्राइंग, उसने पूछा तुम क्यों रो रहे हो. ही आस्क्ड द ब्यूटीफुल स्टैचू, उसने उस खूबसूरत मुजस्मे से पूछा. ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उस हैप्पी प्रिंस के. नाउ स्टूडेंट, open your activity book chapter 3. This is your student book and this is your activity book. Open page number 8, chapter 3, page number 8. Answer the question. What does the swallow do all day? The answer is the swallow flies all day. Question number 2 is why does the swallow want to sleep? The answer is because he is tired. Question number 3 is who is very beautiful? The answer is the happy prince is very beautiful. Question number 4, what falls on the swallow's head? The answer is a drop of water falls on his head. Question number 5, who is crying? The answer is the happy prince is crying. Question number B, look at the picture and complete the crossword. आपको ये पेज नंबर 8 पे क्रॉसवर्ड शो हो रहा है जिसमें पिक्चर्स भी हैं. रेन, बर्ड, विंग्स, हेड, statue, eyes, city and feet, drop of water. तो यहाँ पे सैम्पल करना है, क्रॉसवर्ड में पुट करने हैं आपको. बर्ड शो हो रहा है तो BIRD बर्ड. नंबर 2 इज RAIN रेन. नंबर 3 इज WINGS wings. Number 4 is water, WATER water. Number 5 is HEAD head. Number 6 drop, DROP drop.
Number 7 is prince. 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 Number 8 is city. 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 Number 9 is eyes. 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 Number 10 is Feet. Feet. Hello children, Assalamu alaikum. I am your grade 2 teacher, Grammar Tree. This is the book of Grammar Tree, book 2, second edition. Open page number 8. Nouns number. Sometimes we have to make it clear how many. That is the number of the same kind of persons or things we are taking about, one or more than one. This picture show one book. These are 1, 2, 3, 4. 4 books. 1 pencil, 6 pencils. In this picture, 1 boy, 3 boys. 1 cat, many cats. These examples make it clear that most nouns have 2 forms. The first form, book, pencil, boy, cat, tell us that only one of the same kind of person or thing is meant. This is also called singular. The second form, books, pencils, boys, cats, tell us the more than one of the same kind of things or persons are meant. This is also called plurals. Different nouns have different ways of changing their forms to show numbers. We shall now look at the few ways in which this change is made. One or many. One and many. Books, books. Eyes. Friend, friends. House, houses. Shirt, shirts. Giraffe, giraffes. Cow, cows. Pen, pens. Sister, sisters. Door, doors. Skirt, skirts. Elephant, elephants. Exercise A is fill in the blanks with the correct form of the noun given to show one or many. One has been done for you. 1 horse, 7 horses. 1 ruler, 3 rulers. 1 line, many lines. 1 picture, 4 pictures. 1 tree, 12 trees. 1 owl, 15 owls. 1 dove, 2 doves. 1 razor, 4 razors. 1 hill, many hills. 1 computer, 3 computers. 1 mountain, many mountains. 1 tray, 9 trays. 1 duck, many ducks. 1 table, many tables. 1 chair, 20 chairs. 1 flute, 6 flutes. 1 swan, 7 swans. 1 crayon, 8 crayons. 1 hen, 5 hens. 1 apple, 20 apples. Now in the next page, exercise B is the form of some of the nouns in the following sentences are wrong. Write the correct form in the blanks. 1 has been done for you. X, egg, X. 2, X, 2, X. Crowns,
Humpty sat on a walls, not false, fall, wall. Faraz wore a pair of white shoes. The baker gave me the 3-1, not bun, as bun is not wrong, buns. I ate 1 mangoes and 3 orange. Orange is wrong, oranges. Javed has 1 pet dog and 2 rabbit. Rabbit is wrong, rabbits. Mother put 1 shopping bags on the tables. Tables is wrong, table. There are many animals in the forest. Animal is wrong, animals. This is the right word. There are many roses in my garden. Rose is a wrong word, roses. Roses is the right word. We have added es to change the form of these nouns to show many. Usually nouns ending in x, ch, sh, s or ss change their forms in the way to show many. Add es. Exercise C. Add es to the following nouns to denote more than one. Last word में अगर sh, s, ch, x, sh, ch, x, sh, ch अगर आपको शो हो रहे हैं तो आपको उसको चेंज करके es आपको फर्दर आपको लगाना होगा. बुश, bushes, glass, glasses, branch, branches, fox, foxes, dish, dishes, watch, watches, box, boxes, brush, brushes, bunch, bunches. Now children, page number 8, page number 9 and page number 10 is your homework.